Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सोनू, थैंक यू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Finance Minister Nirmala Sitharaman calls upon the World Bank to make global public goods as her third goal at the Development Committee meeting in Washington, D.C. Key domestic stocks witness marginal gains. Sensex closes above 60,400 level. Nifty settles near 17,800 points. And Brent crude hovers around $87.22 per barrel. वॉशिंगटन डीसी में विकास समिति की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्व बैंक से आह्वान किया कि वे वैश्विक सार्वजनिक सामान को तीसरा लक्ष्य बनाएं। प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली बढ़त में रहे। सेंसेक्स 60,004 के स्तर से ऊपर पहुंचा। निफ्टी 17,800 के करीब हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $87.22 प्रति बैरल के करीब रहा। और एक बार फिर सुन लीजिए, सेंसेक्स 60,400 के स्तर से ऊपर पहुंचा। In our top story, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman attended the Development Committee meeting of the World Bank IMF in Washington, D.C. today. In a series of tweets, the Ministry of Finance said that Ms. Sitharaman stated that New Delhi remains concerned about the global economic outlook and geopolitical environment despite projected growth rate of over 6% for the Indian economy this year. The Finance Minister mentioned that the evolution of the World Bank Group, a report to governors, provides a historic opportunity to think collectively on the evolution of the World Bank Group. She also suggested that the global public goods should also be brought into the focus as a third goal. Finance Minister posited that the World Bank should continue to work for its vision of a world free of poverty and seek to achieve its mission of ending extreme poverty and promoting shared prosperity in a manner that is inclusive, resilient and sustainable. Jayanta, what's your take on global public goods? What are they and how important are they in this IMF World Bank meeting? Well, typically if you take a cue from the role IMF as well as World Bank are taking at this point of time, and the cue from what the Finance Minister has said in terms of the role and overall role they would have on India, they are creating not only a direction at this challenging moment on the macroeconomic side, which we all know, and I guess we'll also be discussing on the sidelines of the stock markets today. What's also important to understand is tackling the overall global growth levels at this point of time, despite the issues which we have in the European region related to the Ukraine crisis. And in addition to that, also to have the broader goals of World Bank as well as the United Nations and the IMF put together of a sustainable, development. If you remember, there was this SDG goals which were supposed to be completed and targeted by 2030. So that's another challenge which we look forward to. What's important to understand is development committee meetings are exercise which are in that sense more of a roundtable chat talk with a definite agenda in mind, with all the global leaders who are tackling the finances in their own home region. For example, our finance minister is also there to tackle. But on the whole, what we do believe is, despite the economic targets, despite the challenges of global growth at this point of time and the macroeconomic impediments, I think what also has to be hugely embodied, which I find narrowly these talks normally tend to miss or overlook, if not intentionally but at least overlook, is the sustainability of these growth factors, keeping in mind that the climate factor
right now is no more just a climate factor. It's a very important economic factor also influencing upon our own focus areas. तो आपने एक बात की क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। सो जो ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स हैं जैसे टेक्नोलॉजी है या नॉलेज है, हेल्थ है, इन पहलुओं पर अगर सारे देश आपस में कोलैबोरेट करें, इसकी आपको कितनी संभावना दिखाई देती है? See, collaboration तो is not a very easy task to make it happen. And उसका सबसे बड़ा सबूत हमने देखे है कि जब एक ट्रेड बॉडी बना था ग्लोबली और जहाँ पे which now has more or less collapsed and people are again coming back to bilateral trades and multilateral trades and things like that. एक जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी जब बने थे, they had a similar objective कि कोलैबोरेट करके ओवरऑल ट्रेड को ग्रोथ करे। उसमें हमेशा कुछ देश आगे बढ़ गया था, अपने मसल पावर्स दिखा रहे थे। तो यहाँ पे ग्लोबल पब्लिक गुड्स में आपका नॉट ओनली लिमिटेड टू इंटेलेक्चुअल कैपिटल बट ऑल्सो आज का तारीख में ईवी का बारे में बात हो रहा है गाड़ियों का। हम सबको पता है कि दुनिया भर में चिप्स, गाड़ी का जो चिप लगता है उसका कमी की वजह से दुनिया भर में प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं से स्थिरता आ गया था, स्थिरता बोल रहा है, कहीं में रुकावट आ गया था और उस रुकावट की वजह से पूरा जो फनल ऑफ कार्स का प्रोडक्शन है उसमें भी वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड ओवर दिक्कत आए थे। नाउ चिप मैन्युफैक्चरिंग या चिप्स का अवेलेबिलिटी पूरा दुनिया में, रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर कंट्री में मिलता है, नाम नहीं लूंगा, अब प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है, बट इट्स स्टिल अ ग्लोबली इट्स अ ग्लोबल पब्लिक गुड टू बी शेयर्ड। सिमिलरली अगर आप और भी जरा प्रोडक्ट्स अगर बात देखें, टेक्नोलॉजी का आपने बात कहा, ठीक है, चलो सवाल ये कि टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस हंगर और शुड बी यूज्ड टू सेंडिंग मैन टू मार्स। दिस इज वंस अगेन समथिंग विच ग्लोबली पीपल हैव टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि जहां पे एक तरफ से अफ्रीकन नेशंस में अभी भी हंगर इज अ सीवियर इशू, over 230 million people are sleeping without food 1 square meal a day, तो वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचा। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी उनका पेट भरेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा काफी सारी चीजें, अगर टेक्नोलॉजी के द्वारा आज का काफी सारी चीजें अगर आप सोल्यूशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज का तारीख में स्पेसिफिकली जहां पे देयर हैज बीन ए स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आइडियाज अमॉन्ग्स्ट वेरियस बॉडीज जो ग्लोबल हेड्स करते हैं बॉडीज सारे, तो वहां पे बहुत जरूरी है ये सारी चीजें भी समझना कि ये सारे अभी इंटरमिंगल्ड है, एक दूसरे के साथ निर्भर करते हैं। शायद हमने कोविड में भी देखा कि जैसे वैक्सीनेशन जो, हाँ, वो एक अगर आप देखें कि इट वाज अ ग्लोबल क्राइसिस विच हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन शायद वर्ल्ड सिविलाइजेशन हिस्ट्री, जहां पे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड वाज क्लोज्ड ऑन एक्सेप्ट फॉर 2 or 3 कंट्रीज। लोगों ने 3 महीना घर से नहीं निकले, सफर नहीं किए, सब कुछ बंद था और सिर्फ मेडिकल हेल्थ एंड इमरजेंसी के ऊपर फोकस था। उसमें भी अगर आप देखें वैक्सीन का जब बात हो रही है, इस वैक्सीन सपोज टू बी अ पब्लिक ग्लोबल पब्लिक गुड एंड ट्रीटेड इन दैट वे, और प्राइवेट कंपनी शुड बी गिवन द राइट टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन एंड सेल इट टू कंपनीज, सेल इट टू कंट्रीज। तो ये सारे इश्यूज जो है, आई डू बिलीव इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन एंड आई डू बिलीव इट्स अ वेरी फेयर डिस्कशन टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी डिफाइंड फर्स्टली एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड। अगर बोट्सवाना में कोई पर्टिकुलर मिनरल के द्वारा पावर प्लांट्स में उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है और पावर को सही रूप से अफ्रीका का हर कोने पहुंचाने के लिए, अफ्रीका का खेती में हर कोने में पावर पहुंचाने के लिए अगर वो इंपॉर्टेंट है वो रॉ मटेरियल, शुड इट बी कंसिडर्ड एज अ ओपन पब्लिक गुड एंड शुड एवरीवन हैव एक्सेस टू इट एंड एट व्हाट प्राइस। तो ये सारे इश्यूज है, मुद्दे बहुत सारे हैं, एक मुद्दे नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी देश बैठता है बात करने के लिए, अगर जितना भी देश है वहां पे उनका अगर ऑब्जेक्टिव अगर ठीक भी रहते हैं, इवन इफ इट्स अ हेल्दी ऑब्जेक्टिव, बट फाइनली इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स कीपिंग ऑन कमिंग इनटू प्ले एंड दैट्स व्हाई आई सेड बहुत जरूरी है व्हेन ग्लोबल पब्लिक गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन, कॉस्टिंग, प्राइसिंग, शेयरिंग, ये सारी चीजें अगर विस्तृत रूप से अगर चर्चा हो रहा है तो बहुत जरूरी है समझना इसका डेफिनेशन क्या है और साथ में ये भी जोड़ना कि क्लाइमेट किस हद तक इफेक्ट होता है। अब सबको पता है इंडिया में कार्बन फुटप्रिंट जो है काफी कम है विदेशी देशों के हिसाब से, लेकिन आप कोई भी ग्लोबल क्लाइमेट समिट में बात करें, लोग चाइना और इंडिया का बात करते हैं, द मोस्ट पॉल्यूटिंग नेशंस। Well, Jayanto, we've had focus on infrastructure development. You have the Vande Bharat trains. Absolutely. In India, you have the expressways, interstate, Mumbai-Delhi, for instance. You have the Jewar Airport, which is scheduled to open as well. How do you motivate a government to ensure infrastructure, for instance, is one of the public goods? Absolutely. As part of their agenda.
World Bank has been instrumental in providing loans in the past also. So how do you link it to the politics of a nation at these kind of meetings such as in Washington DC? See, typically, as you rightly pointed out, India's infrastructure growth story is hugely funded by not only just IMF and World Bank, but also nations like Japan and all, which has contributed very heavily through ADBs and all. So, and if you calculate in terms of money flow, it has basically come in from 3 or 4 nations and 2 major banks, which has helped India carry on this growth story. I'll not call it a success story immediately, but yes, surely a huge growth story and a phenomenal growth story at this point of time. Success would happen only when we have a much more well-entrenched system and where we have actually Vande Bharats, which are homegrown domestic products running in almost all our tracks and not just limited to, but it will take time. So maybe it's 5 years, 10 years down the line. But what's important to understand is with a global perspective, as I said, I come back on the fact that pricing, availability, and accessibility, these are important issues which will be determining in forums like this. It's important to bring these issues up because the discussion has to evolve somewhere, and the discussion also has to reach somewhere in terms of delivery of what has been discussed. The climate goals, it took a good 12 years to arrive at a deliberation and then finally having a target of 2030. These are the targets. We all knew governments fell, and specifically these happened in the educated hemisphere of this world. It didn't happen in Africa. People were not discussing climate, not because they didn't agree to it, because they all agreed to it and there was not a diversion. These things should happen in the Western European nations. It happened majorly in North America, where the discussion was, in a much more skewed manner, and they had a completely diametric view in terms of groups and nations and all. So it has always been found that the rich nations have been found more wanting when it comes to delivery on these issues. And as I said, I'm going back to what I said 5 minutes ago, when finally it comes to the economics of it, the rich would always like to stockpile these and keep it to themselves. And when I say the rich, it doesn't mean rich people like A, B, C, D, it means the rich nations. So there will be a conflict. What's important is for nations like India, with one of the largest populated workforce, largest populated in that sense, one single coherent body, to take forward these discussions in a much more cohesive manner, because this is an era where you just can't, flex muscle and money power and go on moving here with your. और आपको अपनी हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, जैसा कहने की डेवलप्ड नेशंस आर रिस्पॉन्सिबल जो ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है उसके लिए. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई आप मुंबई में धारावी में एक चौल में एक बल्ब 22 लोग शेयर करता है. यूएस में इवन इफ यू कंपेयर विद अ पुअर लोकेलिटी, फॉरगेट अबाउट द रिच लोकेलिटीज, एक पुअर लोकेलिटी में अगर आप कंपेयर करेंगे, घर के बाहर वहां पे शाम से लेके अगले दिन सुबह तक लाइट जला रहता है. आई मीन फॉरगेट द रिच नेशन दे स्विच ऑन देयर ऑफिसेज आल्सो एट नाइट. हाफ द ऑफिसेज आर ऑल लिट with common areas and everything. So that's the huge difference. आप यूरोप में जाएंगे, शोरूम्स में रात को, शोरूम्स में जो शो केसेस होते हैं सब में इल्यूमिनेशन होता है, चाहे पूरा का पूरा मार्केट बंद है, लेकिन all the showrooms are well lit, they have lights, they have everything. So that's how the overall cultural mentality has been when it comes to reduction of carbon footprint, reduction of climate. So अगर बहस हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो ये सब में भी डिस्कशन होना चाहिए. हाउ मच दीज कंट्रीज आर हेल्पिंग, दे आर अफोर्डिंग इट. आई मीन आई एम नॉट टेलिंग व्हाई दे आर डूइंग इट, इज अ वेस्टेज. बट इफ इट्स अ ग्लोबल गुड वी आर टॉकिंग ऑफ, इफ इट्स अ ग्लोबल रिसोर्स वी आर टॉकिंग ऑफ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से एनर्जी क्रिएट हो रहा है, जो एनर्जी कहीं और जरूरतमंद देशों में जा सकता था एट अ चीपर कॉस्ट, वो नहीं हुआ है. तो ये सवाल मैं मानता हूं इस तरह का ओवरऑल वर्कशॉप्स कहे, कॉन्फ्रेंसेस कहे और प्लेटफॉर्म्स कहे, ज्यादा जरूरी कहना, वर्कशॉप्स तो नहीं है, प्लेटफॉर्म्स है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू समवन शुड रिंग द बेल. एंड जैसे एक कहावत है इंग्लिश में, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम. यस, मे बी इट्स नॉट दैट बिट ऑफ एलिफेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स नॉट दैट पीपल आर गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड विद दीज unparalleled or inequitable distributions, but it is there, so there's no doubt on that. तो आशा करते हैं कि इस पाथ पर चलकर हम देखेंगे आगे प्रोग्रेस.
अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। आज के अधिकांश सत्र में नुकसान में रहने के बाद प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 60,400 के ऊपर पहुंच गया और निफ्टी 17,800 के करीब बंद हुआ। दोनों सूचकांकों में यह बढ़त मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.06% की तेजी से 38 अंक बढ़कर 60,431 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.1% की बढ़त से 16 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 17,828 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां बढ़त तुलनात्मक रूप से अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% की तेजी में रहे। The key domestic share indices ended marginally higher today after remaining in the red for most of the session. The BSE Sensex closed above 60,400 points, while the NSE Nifty settled near 17,800 level. Both the benchmark stock indices gained amid mixed global cues. Sensex rose by 38 points, 0.06%, to finish at 60,431, while Nifty at the NSE gained 16 points, 0.1%, to settle at 17,828. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended 0.2% up and the small-cap index surged 0.3%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 17 firms rose while 13 fell. IndusInd Bank was the top gainer with 3.15% up, followed by Power Grid, which gained 1.7%. Axis Bank climbed 1.6% and Bajaj Financial Services added 1.5%. On the other hand, Infosys declined 2.8%. Tech Mahindra and HCL Technologies both slipped 2.1% each. NTPC and Tata Consultancy Services both fell 1.6% each. In sectoral indices at the BSE, 10 out of 20 sectors logged gains. BankX surged 1.4%, Realty gained 1.2%, and Financial Services rose 1%. On the other side, Information Technology declined 2%, and the Tech Index fell 1.9%. Capital Goods and Oil and Gas both were down by 0.5% each. The overall market breadth was positive as shares of 1,912 companies rose, while those of 1,580 companies fell. A total of 118 shares of companies remain unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 23 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 85 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.16% की मंदी से 101.34 पर था। जयंत, तो अगर आज हम देखें तो आज 9वां सत्र है लगातार जब बढ़त हुई है बाजार में, हालांकि आज काफी मामूली बढ़त रही। क्या लगता है आपको, ये जो फाइनेंशियल ईयर की एक मजबूत कहें कि शुरुआत हुई है, इसके आपको क्या कारण दिखाई देते हैं और आप कैसे देखते हैं आगे इस वित्त वर्ष में? क्या आपका क्या एस्टिमेशन है एज एन एक्सपर्ट? देखिए, पहले तो थोड़ा आईटी क्षेत्र के बारे में टिप्पणी करना जरूरी है, क्योंकि टीसीएस का भी नतीजा आया, शायद इन्फोसिस का भी आज आया हुआ। तो एक तो ये है कि ये जो तिमाही है जनवरी से मार्च का आईटी कंपनीज के लिए वो थोड़ा सा धीमे रहते हैं और नतीजे जो है वो उम्मीद से नीचे आया हुआ है, उम्मीद से ऊपर नहीं आया हुआ है और स्लगिश ग्रोथ और साथ में एक मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस ओवरऑल जो वर्ल्ड में फेस हो रहा है, उस वजह से आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन धीरे धीरे परसिस्टेंटली आ रहा है। और हम सबको पता है कि ये अक्टूबर नवंबर से शुरू हुआ था, जहां पे मास जो लोगों को लोग निकाल रहे थे, रिट्रेंचमेंट कर रहे थे, उसका भी एक शुरुआत भी हुए थे। तो प्रमुख रूप से आईटी क्षेत्र में चैलेंजेस का साथ साथ हमें ये समझना पड़ेगा कि आने वाला जो 2 या 3 तिमाही का अगर हम बात करें दिसंबर तक, उसमें बैंकिंग क्षेत्र में मैं काफी उम्मीद देखता हूँ, जहां पे मैं मानता हूँ कुछ HDFC का बैंक का नतीजा आज आप लोग आ गया, आप लोग अमेरिका से नहीं आया हुआ, आज शायद आने वाला है। बैंकिंग क्षेत्र से भी आपको उम्मीद है कि? बिल्कुल। तो बैंकिंग क्षेत्र का अगर हम बात करें तो खास करके कुछ स्टॉक्स पीएसयू बैंक्स में एक बहुत, मैं मानता हूँ इस साल 5 to 6 रियली गुड पीएसयू स्टॉक्स है। टॉप लीडिंग बैंक्स में अगर आप देखें, हम स्टॉक टिप्स यहाँ पे देते नहीं है, लेकिन मोटी तौर से जो मैं मानता हूँ फ्रंट रनर्स है, और प्राइवेट सेक्टर का भी अगर आप 3 टॉप बैंक्स के साथ कंपेयर करें, परफॉर्मेंस लेवल काफी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर हैज टेकन अ मेजर हिट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और उसकी वजह से एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा बहुत नरमी रहा। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इस साल आप कैसे देखते हैं, वित्तीय साल खास करके, मैं मानता हूं कि करीबन अगले 2 तिमाही में ब्याज दरों का जो दौर चल रहा है उसमें बेशक मार्केट में 58 to 60,000 61,000 लेवल भी अगर मेंटेन हो, जो आप देखें पिछले 6-8 महीने में इस लेवल में मोर और लेस मार्केट घूम रहा है,
तो ऐसा स्थिति में मोर और लेस मार्केट बरकरार रहेंगे। गुड स्टॉक्स मैं मानता हूँ इस वक्त अभी भी आपको अच्छे प्रदर्शन में अगर मिल रहा है तो आप ले लीजिए बेशक, अगर आपका साथ अलाइन होता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का। एबनॉर्मल रिटर्न्स इस मार्केट से आपको कहीं नहीं मिल सकता, कोई भी स्टॉक में अगर आप पैसा लगाए, ये मेरा मानना है। तो दिस इज द ईयर जहां पे आप अपना ये समय यूज करके आप अपना रीअलाइनमेंट ऑफ एसेट्स कर सकते हैं, यानी कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एक आम आदमी मोटी तौर से इस सब एरिया में पैसा लगाते हैं। घर आप चलिए हर 15 साल 20 साल में या 10 साल में लगाते रहते हैं, तो घर और गाड़ी का बात ना करें हम। गाड़ी एनीवे इज अ लायबिलिटी, इट्स नॉट अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स का अगर हम बात करें निवेश फिक्स्ड इनकम में भी लगाएं तो आपका एफडी, मेटल्स, गोल्ड सबको पता है इट रीच्ड इज ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई और फिर थोड़ा बहुत अभी नरमी है। एंड मेटल्स के बारे में इस प्रोग्राम में हम लगातार पिछले एक साल में जब गोल्ड 46,000 रुपया 24 कैरेट गोल्ड का जब दर था 10 ग्राम का, तब से हम लोग बोल रहे थे कि एक अच्छा है आपका गोल्ड, थोड़ा स्लगिश आपको लग रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट का तौर से बहुत अच्छा है। सिल्वर का परफॉर्मेंस थोड़ा और बेटर है, लेकिन गोल्ड का लोगों को एक एफिनिटी भी होता है सिल्वर से ज्यादा इस वक्त ज्वेलरी की वजह से। तो गोल्ड हो गया। एफडीज, अभी भी एफडीज में आप प्री-अलाइन कर सकते हैं बिकॉज करीबन 7.5, 8% रिटर्न आपको अभी भी 14 से 15 महीना अवधि तक आपको मिल रहा है, विच इज अ गुड रिटर्न। आप वापस उस पैसा को 15 महीना बाद जब मार्केट इंटरेस्ट रेट थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तब आप फिर से मार्केट में उसको प्रवेश करवा सकते हो उस पैसा को। तो दिस इज अ गुड ईयर फॉर रीअलाइनमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। और जैसे मैंने कहा कि दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइम जहां पे अच्छे स्टॉक्स जो है हेवी वेट्स में कोशिश करिए मिड कैप्स में या लार्ज कैप्स में अपना निवेश को और अपनी डिसिप्लिन रखने के लिए। तो दे आर गुड पिक्स स्टिल अवेलेबल इन दिस मार्केट। Jayant, you mentioned about HDFC Bank. Yeah. Right now the media is on the preview. There's an expectation that the fourth quarter results would be up by 22% because of rise in net interest income. You mentioned about TCS and Infosys, the bellwether stocks. But just looking at the stock indices, Sensex went up marginally by 38 points after 9 consecutive sessions of a rise in the market. Do you see it correcting now? What would you advise small time investors who are looking to enter the market or exit the market for that matter? We still have next week. No, I see. Market exit is basically focused on the fact that there would be some urgent requirements for your transactional requirements. Typically, we would like to exit. Sorry, I don't think it will be a good time at this point of time to exit stocks, or if you have a good pick waiting ahead and you want to realign you, as I said. So those are fine. I mean, this is all part of normal, natural investment strategies. But this is not a time to exit, certainly not. I mean, it's not like we are facing a crashing market in the next 2 to 3 months that you can exit markets, or even your stock specific requirements. If your investment appetite or your alignment to your investment strategy has changed, that's fine. I mean, you can realign your portfolios. But surely, I think, as I always said, for the last 3-4 months, this is a good time where you need to realign your portfolios. If you are on to 70-80% into stocks, try to realign them. Go into metals. Go into FDs and try to figure out and see what you can do. Obviously, FDs will give you around 8.5-9% returns at this point of time, and this is a safe bet rather than being in the stock markets, which, as I said, I don't see huge upsides, but I don't see a free fall also from this stage. आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हांगकांग के टेक क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली के चलते एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। उधर अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़ों में नरमी से अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने के संकेत प्रतीत होने के बीच डॉलर में दबाव था और अल्प अवधि के बॉन्ड मजबूती में थे। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.4% की बढ़त आई। जापान के निक्केई और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों में 0.3% की वृद्धि रही। हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% की बढ़त में रहा। हालांकि चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी रुख सकारात्मक था। फ्रांस के कैक में 1% की वृद्धि थी। जर्मनी के डैक्स और लंदन के फुट्सी में बहुत ही मामूली बढ़त थी। Jayant, briefly about the Asian stock market, now that the age of easy money is over, your Fed Reserve is not buying 1/4 of corporate bonds anymore. They're raising interest rates, but there's still plenty of liquidity in the market. We also have the Japanese central bank
unwinding their position in US Treasuries to the tune of more than $3 trillion. What is the Asian markets looking like right now to you? Well, briefly. As I said, there will be a mixed response. I don't see much upside for even the Asian markets. I mean, they're in tandem with what the global markets are doing. We can have a brief intra-week ups and downs in terms of good swings, but I'd not be very overtly excited to see Asian markets and go and invest in those markets, specifically keeping a 6-month time window or horizon of investment. Let's have a look at the US stock market. Wall Street stocks fell yesterday as recession concerns weighed on investors, even as traders assessed the release of lower than expected inflation data. The Dow Jones Industrial Average fell 0.1% and the S&P 500 declined to 0.4%. The Nasdaq Composite Index fell 0.85%. What's the inflation position in the US and corporate earnings there? That's a good question because, as I said, there is a varied response sectorally. While on one side the consumer indexes has been going on really high because of the price inflation, and there has been a demand rise too. But on the other hand, we also have seen job losses heavily happening in most of the markets. So it's a divided market, but then overall the markets are tense and the markets have responded to the to the Fed comment on interest rates not going off that easily as they were expected to from May onwards. And briefly, recession का जो एक डर था, उसकी अभी क्या सिचुएशन आपको दिखाई देती है? मैं मानता हूँ कि रिसेशन का खतरा अभी तक खत्म नहीं हुए. बेशक लोग रिसेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा चर्चा कम हो रहा है, लेकिन जॉब लॉसेस अभी भी चल रहे हैं. जॉब लॉसेस में कोई कमी या कहीं पे रुकावट आया नहीं है. और ये निर्भर करता है कि ये जो दौर चलेगा जॉब लॉसेस का, तब तक अगर डिमांड ग्रोथ वापस आता है तो कहीं ना कहीं वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट लैंडिंग of the recession story. Otherwise, if it deepens, then obviously recession will be a much more realistic so, ये uncertain But let me tell you, यूरोप में खास करके जर्मनी, फ्रांस में कहीं ना कहीं वो सब जगह में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का कुछ ना कुछ आंकड़े अच्छे आए हुए. डेफिनेटिव सेक्टर में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अच्छे कुछ आंकड़े आए. तो एज आई सेड, रिसेशन के बारे में मीडिया लिख नहीं रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि रिसेशन का खतरा खत्म हो गया. The US dollar index is at 101 Absolutely. Now. It's come down. What does this mean for global currencies like the rupee? Well, I still believe that it's not going to have a major impact in terms of what the local currencies are performing. As we all know, across the board, last 6 months, almost all global currencies have really fared badly against the US dollar. Let's have a look at the oil market now. Oil prices were stable today in intraday trade as the market weighed the prospect of tight supply against a possible recession in the US, the world's largest oil consumer. Brent crude was trading at around $87.22 per barrel. West Texas Intermediate WTI crude was trading at $83.20 per barrel when reports last came in. Jayanta, do you think the Fed's decision to raise the discount rate will actually deter oil spending by the US government and the private sector there, and that would in turn reduce demand? Well, two things. One is US oil inventory is not that level at normally which they are before the start of summer. So that's an issue there on the supply side. Having said so, the oil cartel were expecting some sort of a reduction in rate of interest and global growth coming back, which has not happened and not going to happen in the next 6 months. So if I would have been a part of a member of a cartel, I would have been at my wit's end to understand whether we should cut demand at this point of time production or we should go ahead and increase the production. So there is a conflict there and there is a confusion there in terms of oil prices. In one single sentence, oil prices are going to remain soft. और आपने अभी थोड़ी देर पहले सोने की बात की थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 269 रुपए की वृद्धि से 60,897 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. मई अनुबंध वाली चांदी भी 389 रुपए का उछाल दर्ज करते हुए 76,302 रुपए प्रति किलो पर थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी दर्ज करता हुआ $2,040.50 प्रति आउंस पर था. चांदी भी बढ़त के साथ $25.74 प्रति आउंस पर थी. समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयंत उपाय. And before we close, a reminder of the headlines. The Finance Minister Nirmala Sitharaman calls upon the World Bank to make global public goods as a third goal at the Development Committee meeting in Washington, D.C. Key domestic stocks witness marginal gains. Sensex closes above 60,400 level. Nifty settles near 17,800 points. And Brent crude oil hovers around $87.22 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Market Master.